जोपर्यंत तुझा प्राण आहे, जोपर्यंत तुझा प्राण आहे. Good morning everyone, respect principal, teachers, parents and all my dear friends. My name is Shivanya Sandeep Dhere. I am in 4th class. Today we are celebrating 75th Republic Day of India. That is why we are gathered here. On 15th August 1947, we declared our independence from the British rule. Hence in Marathi we say स्वातंत्र्याची ध्वजा फडकते सूर्य तळपतो तेजाचा, स्वातंत्र्याची ध्वजा फडकते सूर्य तळपतो तेजाचा, भारतभूच्या पराक्रमाला आमचा मानाचा मुजरा, आमचा मानाचा मुजरा. But our nation was still without a written constitution. But on 28 August 1947, our drafting committee was adopted to draft a permanent constitution. With the help of Dr. Babasaheb Ambedkar, who is well known as the father of the Indian Constitution. After many modifications to the Constitution, the final draft was adopted on 26 November 1949 and took effect. Hence in Marathi we say भारत देश महान, आमचा भारत देश महान, स्फूर्ती देते आम्हाला देशाचे संविधान, देशाचे संविधान. Republic means the supreme power of the people living in country, and only public has rights to elect their representatives as political leaders to lead the country in the right direction. So India is a republic country after 26th of January 1950, where public has rights to elect theirs as a president and prime minister. Let us also remember the freedom fighters and their sacrifices. Freedom are very priceless because brave soldiers fight continuously on the border to protect our country. Hence in Marathi we say जे देशासाठी लढले ते अमर हुतात्मे झाले, सोडिले सर्व घरदार त्यागिला सुखी संसार, ज्योती समजीवन जगले ते अमर हुतात्मे झाले, ते अमर हुतात्मे झाले. Because of our soldiers, we can think from our own mind and live freely in our country without everyone's faults. Hence, let us all pledge today to do our best and make our country the best country in the world. At last, I like to say my favorite lines in Hindi. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो. जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम. कुछ के बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ के बिना ही जय जयकार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना कभी ना करता है, कोशिश उसकी नाकाम हर बार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. After that